हाय गाइस, माय नेम इज़ विशाल। आज मैं आपसे उन 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा जहाँ पे आप ईज़िली जॉब अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से, जहाँ पे ईज़िली जॉब मिल भी जाती हैं और ईज़िली आप माइग्रेट भी कर सकते हैं। इन 5 कंट्रीज़ के नाम के साथ-साथ मैं आपसे बात करूँगा थोड़े कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, व्हिच विल मेक इट ईज़ियर फॉर यू टू डिसाइड व्हिच कंट्री यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इन माय लिस्ट। So first in my list is Singapore. Singapore क्यों? 2.5 years ऑलमोस्ट मैं सिंगापुर में खुद रह चुका हूँ एंड वन थिंग आई कैन टेल यू इज़ सिंगापुर में जॉब फाइंड आउट करना while you're based in India is very easy. You can easily find the job, easily give the interview. The whole process is very smooth. They give you an employment pass with which you can easily migrate to Singapore. Let's look at some of the pros and cons of migrating to Singapore. One of the pros is it is such an amazing country which has lot of opportunities. अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। अगर आप कंसल्टिंग साइड सेक्टर में हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप और कोई भी सेक्टर में हैं देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर फॉर सिंगापुर। The second positive side is it's very near to India. Almost 4 साढ़े 4 घंटे की फ्लाइट है to Delhi or to even Chennai, and it's very close to India. एक ऐसी लोकेशन है जहाँ आप easily जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली से बहुत दूर नहीं हैं। बहुत ही होमली फील होता है वहाँ पे आपको। If you ever go to Singapore, then you will definitely realize what I'm talking about. Third point, I think Singapore is one place wherein it's full of youth, full of multicultural languages, multicultural people, multicultural environment. It has beaches, it has places to visit to, and it has tons of things that you can do. One of the more important points for is it is very well connected to a lot of different countries. For example, मलेशिया है बिल्कुल लगा हुआ सिंगापुर से। आप ड्राइव करके मलेशिया जा सकते हो, आप फ्लाई करके मलेशिया जा सकते हो। आप थाईलैंड जा सकते हो, आप इंडोनेशिया जा सकते हो, आप म्यांमार जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप एशिया पैसिफिक की सारी कंट्रीज़ घूम सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट वाई पीपल कंसिडर टू लिव इन सिंगापुर. Fifth point is that Singapore has so much easier in terms of the language because वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। वैसे वहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं एंड इट्स कॉल्ड सिंगापोरियन, बट देन इट्स वेरी इजी टू फॉलो द लैंग्वेज। कोई बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। Lot of people from India are there. A lot of migrants you will find, lot of people as a student you will find. So एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए सिंगापुर अगर आपको जाना है। The only negative side that I can look for Singapore is उसका weather. And when I say weather is because थोड़ा सा humid weather है. Something like Bombay or Chennai टाइप का middle sort of weather आपको मिलता है। अगर आप नॉर्थ ऑफ इंडिया में रहते हो तो आई वुड से समथिंग लाइक जुलाई और अगस्त में जैसा वेदर होता है अपने नॉर्थ ऑफ इंडिया में, वैसा वेदर आपको वहाँ मिलता है। बट आई पर्सनली लव्ड द वेदर टुवर्ड्स द नवंबर दिसंबर टाइम में वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर सम पीपल इट माइट बी नॉट द फर्स्ट चॉइस। बट इफ आई हैव टू लिस्ट द नंबर वन कंट्री दैट आई वुड माइग्रेट टू इज सिंगापुर. Now, talking about the second country in my list, second country is Dubai. दुबई भी एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत सारे इजी ऑप्शंस मिल जाते हैं इंडिया से बैठे बैठे जॉब्स अप्लाई करने के लिए, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दुबई जैसी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ रहने के लिए. Especially if you are into banking and financial sectors, if you're into FMCG, if you're into hotel industry, if you're into technology side as well, even Big Four for that matter. बहुत सारे options हैं, बहुत easily job मिल सकती है और एक बहुत ही अच्छी life है वहाँ पे. So let's look at some of the positives. One of the positive is it's a tax-free country. So every सिंगल दिरहम दैट यू अर्न, वहाँ की सैलरीज दिरहम में आपको मिलती हैं. एवरी सिंगल दिरहम दैट यू अर्न इज़ टैक्स फ्री. सो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता गवर्नमेंट के लिए.
आपको पूरा इनकम जितना भी आप पैसा कमाते हो सारा आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो पर्सनली आपका हो जाता है और you can spend so much and make a lot of money there. So that's one of the positives. Second positive is, again, it's very near to India, right? 3-4 घंटे की फ्लाइट है. It's very near. You are near to your family. आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो, जब मन करे आप इंडिया आ सकते हो. मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं दुबई में, एंड व्हाट दे डू इज़ दे डू अ वीकेंड ट्रिप सेम एज सिंगापुर एज वेल. सो आप फ्राइडे को बैठे और संडे को वापस चले गए, इफ़ यू आर लिविंग इन सिंगापुर और दुबई फॉर दैट मैटर. और वन ऑफ द अदर पॉजिटिव इज़ इट्स वेरी नियर टू यूरोप. सो अगर आपको यूरोप घूमना है और आप दुबई में रहते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. आप दुबई में रह के पूरा यूरोप घूम सकते हो. 1-2 घंटे की फ़्लाइट रहती है. आप यू आर अर्निंग इन दिरहम्स, यू आर अर्निंग एनफ दैट यू कैन एक्सप्लोर द होल यूरोप. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उस साइड रहने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएई साइड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ओके विद द कल्चरल थिंग्स एंड लिटिल बिट ऑफ द वेदर, देन दुबई इज़ द प्लेस. Let's look at one of the negatives, right? The negative being the weather. दुबई का वेदर भी कुछ ऐसे ही बहुत ही ह्यूमिड रहता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट वेदर है समटाइम्स. मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशन बेस्ड हैं. जैसे आपके मॉल्स हो गए, आपकी शॉप्स हो गई, आपके ऑफिसेज हो गए, आप एवरीवेयर यू गो देयर इज़ एयर कॉन एवरीवेयर. सो इट्स ईजियर टू सॉर्ट ऑफ ट्रांजिट बिटवीन प्लेसेस. बट जब आप नॉर्मल बाहर होते हो, आप बिना एसी के होते हो, देन इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट. बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु कीप टेलिंग ग्रेट थिंग्स अबाउट दुबई. मैं पर्सनली दुबई में नहीं रहा हूँ, बट that is one country that I would want to explore at any point, at given point in my life. Let's move on to the third country. Third country I'm going to talk about is Netherlands. Netherlands एक ऐसी कंट्री है, आज के टाइम में बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं. Let me give you a quick example. Companies like Cognizant, companies like HCL, TCS, companies like Wipro, companies like your EMC, Dell, and there's so many other companies right out in the world that are giving a lot of opportunities for people to travel to Netherlands. और नेदरलैंड मूव करने का एक अच्छा तरीका है हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा, for which I'm gonna talk about in a separate video altogether. And it will give you an easier idea to how to move to Netherlands. So if you're working in a service sector or a service-based company, it's easier to look for opportunities wherein you can find long-term projects to move to Netherlands, even for that matter, short-term projects to move to Netherlands. Let's talk about a little bit about positives of moving to Netherlands. Well, first thing I would say is a beautiful country. I have personally visited the Netherlands. उसकी कैपिटल एम्स्टरडैम. I mean, there is, if you know about Netherlands, if you know about Amsterdam, there is not much I can say. It's a beautiful country, full of canals, full of cycles everywhere. It's a different culture. Although they do speak Dutch, but they do speak a lot of English as well. Hence, it is easier to migrate. Second positive, it's in Europe, guys. So, अगर आपको यूरोप घूमना है, तो Netherlands is one place wherein you can have breakfast in one country, lunch in another country, and dinner in another country. So Netherlands is one of the best places, I would say, if you want to be based in Europe. Third is I do have few of my cousins who actually live in Amsterdam. They are living in Amsterdam, working in Amsterdam, and they keep talking great things about Amsterdam all the time. And then there is another city called Rotterdam, and then there's Utrecht too. So depending on where is the office for the company, where you get a job, you can easily migrate, and they're all very near. So you don't have to think about कि अगर मैं रोटरडैम में रह रहा हूँ तो एम्स्टरडैम कितनी दूर है, उट्रैक्ट में रह रहा हूँ तो एम्स्टरडैम कितनी दूर है. I think once you find a job in Netherlands, it's easier to sort of move from one city to another eventually. So that is all the positives. Last but not the least, the negative about living in Netherlands, I think the only negative I can think is they do speak Dutch, right? Learning Dutch is not easy. I mean, of course, but if you want to, you can learn Dutch. But I think that once you are there, once you start to sort of live there, it's easier to learn Dutch. You can take some classes online, or you can join some classes on face-to-face basis. But it's a easy process. It's not that difficult.
Fourth in my list is Canada. Well, Canada अभी बहुत famous हो गया है, especially like how it has become very big and famous for the people who want to migrate to different countries, and Canada is one of those countries. So let's talk about positives, right? There are tons of opportunities in Canada, especially skilled immigrants के लिए, skilled migrants के लिए, skilled लोगों के लिए. Canada is open. Canada is calling people all the time. It's a point-based migration. आप इंटरनल जॉब्स भी अपने कंपनीज में देख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आप इजीली यू कैन फाइंड आउट अ वे टू माइग्रेट देयर. And if you want to become a PR of Canada, which is a permanent residency of Canada, that's a separate process altogether. You can apply for a PR and then you can migrate to Canada. Uske liye bhi, if you want me to make a separate video, please do mention in the comment section. I will make a separate video on Canada, how to migrate to Canada on the basis of PR. While I'm talking about Canada, let's talk about quickly the positives. The positive being there are tons of opportunities, right? Especially given that if you are into technology, if you're into FMCG, if you're into Big Four, if you are into development side of things, digital space, digital marketing, developer. There are all sort of skill sets that Canada is open to. Especially COVID के बाद अब बहुत ही ज़्यादा opportunities खुल गई हैं. Canada, countries like Canada are looking for people to come in and become part of their country, live there, and easily find the job as well. Quickly talking about the negative of Canada, I think the only negative I can think of is the weather. Weather बहुत ही extreme cold है. Almost 6 months snow होती है, तो sometimes it can be difficult for the people who do not like to live in the snowy weather. -20 तक temperature चला जाता है. I have a couple of cousins who live in Canada and we keep chatting about it, and for them sometimes they find it difficult, but sometimes they find it easy as well. So that's covering the Canada. By the way, if you are liking my video and if you're liking this content, and if there is any specific things that you want me to make the video on, please like, share and subscribe, and do mention in the comment box आप किस चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं कवर करूं, and I will surely make this video about that particular subject. Before I move to my fifth country, I want to mention that I will be making a video on how to find jobs in Singapore. I will share the links. I will talk about the ways to find the jobs. I will also talk about, a little bit about Australia, which is the fifth country I'm going to talk about. So do subscribe my channel so that you do not miss out any specific information that I'm going to be getting you on the way in my future videos. So my fifth country is Australia. And currently I live in Sydney, Australia. और मैं इस देश के बारे में जितना भी बात करूँ कम है. It is a beautiful country. It's a beautiful place for lot of Indians have migrated here. It's a beautiful country for the skilled immigrants. आपको बहुत सारी opportunities मिलती हैं jobs की. आपको बहुत ही amazing medical facilities भी मिलती हैं. आपको education system मिलता है. I mean, lot of greenery, lot of beaches, lot of mountains. It's actually like India, right? It has 4 different weathers, which is very much like India. It has everything that you can think of. And although, the only negative I can think of is it's a bit further down in the southern hemisphere. थोड़ा सा दूर है इंडिया से, थोड़ा सा नीचे है, wherein you feel कि आप थोड़ा सा वर्ल्ड से secluded हो. But it is near to New Zealand. It is close to Singapore. It is close to Indonesia. Not very far from India also. It's about 15 hours of flight. But I would say it's an amazing place, and I love being in Sydney right now. And I would continue to be here for some time for sure. So that's about the 5 countries I have told you about. Now you can make your decision on where you want to migrate to. What are the opportunities that you want to look to? A lot of people are making the decisions to migrate to these 5 countries. And out of these 5 countries also, there are number of countries. But ये 5 countries मैं कहूँगा बहुत ही आसान है jobs find out करना, easily इंडिया से बैठे बैठे जॉब मिल जाना, इंडिया से बैठे बैठे माइग्रेट करना,
or these 5 countries are especially across the globe, so it gives you an opportunity to travel and to to live abroad, to experience that life. If you want to move out from India, if you have gained some experience of 5 to 7 years or even less or more, आप अपनी फैमिली से डिसाइड कर सकते हो, आप खुद डिसीजन ले सकते हो आपको क्या करना है. And I would personally say that if you are willing to take risks in life, might as well move out and see what is in it for you. Because अगर आप जब तक जाओगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे. लोगों से बात करें, YouTube करें, Google करें. And one suggestion I would give is, if you want to migrate to any country, or if you're thinking of getting a job in any country, I would suggest you to take a tourist visa and actually travel to that country. I have done it myself, and it's the best way to explore that country. And given the time we are in, it's easier to get the visas and easy to travel. एंड आप चीपली ट्रैवल कर सकते हो, चीपली 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह के आ सकते हो. आपके कुछ फ्रेंड्स हो वहाँ पे, या फिर आप हॉस्टल्स में रह सकते हो, आप हॉप अराउंड कर सकते हो. सो इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ विच कंट्री यू लाइक मोर, विच कंट्री वुड माइट वांट टू सेटल फॉर फ्यूचर, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, and make your life much more easier or much more happening in terms of that. So I would say just hustle and take risks in life, and continue to watch my channel. So thank you so much. If you like this video, please do like, share and subscribe, and continue to watch my channel for such informative videos. And adios for now. I will look forward to meet you in my next video. Thank you.